I welcome all the students to Reflection of Light Part 2. When we had finished Part 1, we had understood the four basic rays which are used to make ray diagrams, right? So now today we will go on to make images for different positions of the object in front of a concave mirror, right? Let me start with the first case. We go to image formation by a concave mirror when the position of the object is at infinity. Okay, this we have already discussed when we discussed the focus of a concave mirror. There also we had imagined that the object is at infinity. हमने वहाँ पे भी ये सोचा था कि जो ऑब्जेक्ट है शीशे से बहुत दूर है तो पैरेलल रेज आ रही हैं, रेज पैरेलल आ रही हैं टू द principal axis. Okay, this is the principal axis, and we had assumed that the rays are coming parallel to the principal axis. This is one ray, here we have the second ray, here we have the third ray. ठीक है, जब वो शीशे से टकराती हैं, now if I make a normal, it will pass through the center of curvature, okay, like this, and it goes on to the point of incidence. And the angle of incidence is equal to angle of reflection, so the ray passes through the focus. Now we are using here the first rule, that a ray parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror passes through the focus. ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरी रे ली. Again the ray is parallel to the principal axis, so after reflection from a concave mirror it will intersect the other rays at the focus. So you can see that the rays are meeting at the focus, which means the position of the image is at the focus. Where do I get the image? I get the image at the focus. Now I had told you कि अगर rays नहीं मिलती हैं तो हमें एक virtual image मिलती है backward extend करके, लेकिन अगर रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर हमें एक रियल इमेज मिल रही है, एक ऐसी इमेज मिल रही है जिसको कि हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, तो हमारी एक्टिविटी भी है 10.3, जिसमें आपको यही करना है कि आप एक सूरज को लीजिए या एक पेड़ को लीजिए और एक स्क्रीन लीजिए और स्क्रीन को आगे पीछे मूव करिए जब तक कि आपको एक क्लियर इमेज नहीं मिल जाती है. जहाँ पे इमेज आपको मिलती है उस जगह से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो उस कनकेव मिरर की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है. सो दैट सिमिलर एक्टिविटी, इफ यू रिमेंबर, दिस रे डायग्राम इज वेरी इजी. So the rays coming from a far off object will be parallel to the principal axis, then the rays intersect and I get the image at focus. And if it is a real image, then it has to be inverted. Okay, a real image is always inverted. So what is the nature of the image? The nature of the image is real and inverted. And now suppose this was a tree, so it's a huge tree, और मुझे उसकी इमेज कितनी बड़ी मिल रही है? केवल एक पॉइंट साइज की मिल रही है. ओके, विच मीन्स द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. आई गेट अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज. सो द पोजिशन इज एट फोकस, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. वेरी ईजी. आपको जब ये रे डायग्राम बनाने को आए तो आप एक कर्व बनाइए. आई सेड यू कैन यूज अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. उसके बाद आप उसके बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन बनाइए विच इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Once you have done this, then you can make parallel rays, one on this side and the other on this side. जब ये हो गया, मैंने आपको बोला है अगर आपने रेडियस लिया है 8 तो आप 4 पे उसके बीचों बीच, because now we know that for mirrors of small aperture the radius of curvature is double the focus. तो उसके बीचों बीच मैंने ले लिया, which means half the radius of curvature. 4 सेंटीमीटर पे मैंने ये ले लिया और उस रे को उस पॉइंट से मिलाऊंगा, इधर उस पॉइंट से मिलाऊंगा, एंड द रे डायग्राम इज कंप्लीट. ऑफ कोर्स आई नीड टू पुट द एरोज. विदाउट द एरोज यू विल एंड अप लूजिंग हाफ अ मार्क. तो मैं अपने एरोज लगाता हूं एंड माय रे डायग्राम इज कंप्लीट. नाउ सम स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि सर ये तो पॉइंट साइज इमेज है, पता कैसे चलेगा कि ये इन्वर्टेड है? रियल है, चलिए एरोज आई मीन रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें दिख रहा है.
How do I believe that it is inverted? Okay, so for that we have another case. Now this time we don't take the rays coming parallel to the principal axis, हम उनको infinity से एक ऑब्जेक्ट जो infinity पे है उससे लेके आते हैं, लेकिन इस बार obliquely लाते हैं, which means we bring them at an angle to the principal axis. Let's have a look at the figure. Okay, here we have the figure. You can see that the object is still at infinity, which means very far away as compared to the radius of curvature of the mirror, but the parallel rays this time are coming at an angle to the principal axis. They are coming obliquely, they are not coming parallel to the principal axis. Okay, so we say let the first ray pass through the focus. Which rule are we using? We are using rule 2. अगर रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद principal axis के parallel हो जाएगी. So I draw a ray which passes through the focus, and after reflection it becomes parallel to the principal axis. Second ray, I make it parallel to this one, but I make it pass through the center of curvature. तो rule number 3, अगर center of curvature से जाएगी तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते लौट जाएगी. Because if the angle of incidence is 0, the angle of reflection also needs to be 0. तो अब हम देखते हैं reflected rays कहाँ मिलती हैं. ये incident ray है and this is the reflected ray. Okay, ये incident ray है और यही reflected ray है. तो ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? ये दोनों इस जगह पे मिलती हैं. So if this had started from the head of the image, now I see that the head of the image is over here. Similarly, when I obtain the base, I get the base over here. So now you can see that the image is upside down, and we know the rule also, if it is a real image, it has to be inverted. So we get a real and inverted image. So if the object is at infinity, I get the image at focus. What is the nature of the image? The image is real and inverted. And what is the size of the image? The image is highly diminished. Okay, we go to case 2. Now case 2, in this my object is beyond center of curvature. मतलब अब दूर है लेकिन infinity में नहीं है, अब center of curvature के पास में है. Got it? So this is my center of curvature. जो भी मैंने center radius लिया है उसके हाफ पे मैं focus बना दूंगा. Right? अपना मैंने concave mirror बना लिया, इस तरफ shading कर दी to show that this is the non-reflecting surface, and then from the head I draw a ray which is parallel to the principal axis. Principal axis के parallel मैं एक ray बनाता हूँ. Rule number 1. ठीक है, अगर ray parallel है तो क्या होगा? Everybody knows this now. It has to pass through the focus. So there it goes through the focus. My first ray is done. And second, I said all the intelligent students use this ray a lot. अगर हमारे पास option है उसे use करने का. So I use it. I bring another ray which passes through the center of curvature. So if it passes through the center of curvature, it retraces its path. Okay. And where do I get the image? I get the image between C and F. I get my image between C and F. You can see that the rays are meeting at this point. So if this is the head of the object, then the base will come here. If I had named the object AB, I named the image A dash B dash. Okay. So the position you know between C and F. आपको ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बस अगर आपने इतना ध्यान रख लिया कि जितना भी आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है उसके हाफ पे आप फोकस मार्क कर देंगे, उसके बाद आप रूल 1 और रूल 3 यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज आपको खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी. इफ़ यू ड्रॉ अ रफ ray diagram, if the ray diagram is not asked in the question, still you can make a rough ray diagram and answer the questions related to the ray diagram, right? So my object position is beyond the center of curvature and I get the image between F and C. You can see that the rays are intersecting. So if the rays intersect, it means
my image is real. I can obtain it on a screen. अगर real है तो मैंने बोला it has to be inverted, and you can see the head is down, there the head is up, and here the head is down. Okay, so it is inverted, real and inverted. Now I see the size. You can see that the image is quite small. It is less than half the size of the object. So my image is diminished, right? We go to case 3, and in case 3, now my object is at C. This, I don't know why, but is all-time favorite question. Almost every second year, every year, the board has a question which is related to this ray diagram. Okay. In this, my object is at the center of curvature. Got it? So again, I do the same thing. I make the principal axis, I make a concave mirror, I shade on the outer side to show that this is the non-reflecting surface, and then I mark my focus at the middle of the radius of curvature, whatever length I have taken. If I have taken 10 centimeters, I mark the focus at 5 centimeters. Once I have done this, then I make a line. Okay, and now again I take a line, a ray which is parallel to the principal axis. It strikes the mirror, gets reflected. We know rule number 1, it will pass through the focus. Okay, I take rule number 2. Because I can't take it from the center of curvature this time, it's standing on the center of curvature, so it's out of question to use that rule 3. So I take rule 2. Rule 2 में अगर मेरी रे फोकस से होती हुई जा रही है तो after reflection it will become parallel to the principal axis, and I see that they meet at a point which is exactly at the center of curvature. So if that was AB, I get A dash B dash again at the center of curvature, which means the position of the image is at C itself. Are the rays meeting? Yes, they are meeting. So if they are meeting, what kind of an image it is? It is a real image. If it is a real image, it has to be inverted, and yes, I see the head hanging down, upside down, so it's an inverted image. Now the size, if you look at it, if you have a scale, you will measure it, you will find that the size of the image is exactly the same as the size of the object. So the size is same as the object. Okay, now this we have understood. पर प्रैक्टिकली इसको बनाते वक्त बच्चे अगर छोटी छोटी भी एरर्स करें ना, तो वो या तो ज़रा सा पीछे या ज़रा सा आगे आ जाता है. फिर बच्चे कहते हैं अरे सर मेरा तो बना ही नहीं, आपने बोला था रूल्स यूज़ करोगे तो वो जगह पे गिरेगा ही गिरेगा. ओके, अगर आप छोटी मोटी एरर्स करेंगे तो वो एरर्स कंपाउंड होके फिर आपको थोड़ी बड़ा वेरिएशन दे देंगे. सो द ईजी वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लिया, फोकस मार्क कर लिया, ठीक है. अब मैं केवल ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ. मैं अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे 4 सेंटीमीटर की लाइन एक साथ बना देता हूँ. उसके बाद मैं इसको यहाँ पैरेलल बनाता हूँ और फोकस से होता हुआ जो नीचे की तरफ लाइन है उससे ज्वाइन करा देता हूँ. सेकेंड रे को मैं फिर से ऐसे यहाँ पैरेलल पहले बनाता हूँ, यहाँ से मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाता हूँ, यहाँ जोड़ दिया और इन दोनों पॉइंट्स को फोकस से होते हुए फिर से जोड़ दिया. फोकस भी मैं कहता हूँ आपने जब बना लिया जहाँ इंटरसेक्ट का हो रहा है वहाँ पे बाद में फोकस लिख दो. ओके, सो दिस वे यू डोंट हैव टू स्ट्रगल. आपका बनाना बहुत ईजिली आप बना सकते हो. गॉट इट? वी गो टू द नेक्स्ट केस, एंड द नेक्स्ट केस इज image formation when my object is between C and F. Okay, मेरा ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, फिर C पे आया, अब और आगे आ गया. अब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया between C and F. Okay, तो अगेन आई डू द सेम थिंग. आई मेक द प्रिंसिपल एक्सिस, आई मार्क C. जितना मैंने C लिया उसके आधे पे फोकस बनाया और उसके बाद मैंने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहीं भी between C and F. रूल नंबर 1 हम फिर से यूज़ करेंगे. आई मेक अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जहाँ पे भी वो टकराएगी वहाँ से उसको फोकस के थ्रू पार करा दीजिए. गॉट इट? दूसरी रे सबसे ज़्यादा हमें यूज़ करनी है. कौन सी रे?
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। तो अब ये आगे है, विच मीन्स इट स्टार्ट्स फर्स्ट एंड देन इट रिटर्न्स। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्फीयर रखूँगा, यहाँ रखूँगा, देयर माय रेज गोज देयर and then it comes back and passes through the center of curvature. Got it? And I can see them meeting at a point which is beyond the center of curvature. So my image position is beyond C. The rays are actually meeting, so it is real. If it is real, it has to be inverted. And yes, I can see the head hanging down. मुझे A dash B डैश लिखना है यहाँ पे। ओके, एरोज मार्क करने हैं, ये पहला रे, ये दूसरी रे। ओके, ये रे उधर को गई और ये उधर से वापस पीछे आई। गॉट इट? नाउ यू सी द ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज बड़ी है। गॉट इट? सो माय इमेज इज एनलार्ज। नाउ यू मस्ट हैव नोटिस वन थिंग, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो खिसक के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच गया तो इमेज पीछे गई। हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे खिसकती जा रही है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर दिस, दिस विल हेल्प यू इन ensuring, in realizing that whether you have made the correct ray diagram or not. Now we bring our object at F. जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब मुझे इमेज कहाँ मिली थी? मुझे इमेज मिली थी फोकस पे। तो अब उल्टा हो रहा है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो मुझे इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी में मिलेगी। इसमें भी रूल सेम है, बनाना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा एक्सप्लेन करने के बाद। ओके, तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया फोकस पे, मेरी पहली रे जो है वो पैरेलल है, सो इट गोज, इट स्ट्राइक्स द मिरर। आई नो रूल 1, इफ इट is parallel to the principal axis, it has to pass through the focus, so it crosses through the focus. Second one, most often used, so I align the center of curvature with the head, and if my ray goes as though it's coming from the center of curvature, it retraces its path and passes through the center of curvature. And I see that the rays are parallel, which means they will never meet. They are going to go like that. They may meet at an infinite distance. Hence, my image position is at infinity. Now, they will meet at infinity, at a very far away distance if you compare it with the radius of curvature of the spherical mirror. So, it is real, and if it is real, it has to be inverted, and you know that the distance is quite large as compared to that of the radius of curvature, so it has to be highly enlarged. अब इसको बनाने का तरीका, okay? हम रूल्स हमें मालूम है, क्यों हो रहा है पता लग गया, बनाना कैसे है? आई मेक द कर्व, ओके, आई मेक द प्रिंसिपल एक्सिस, आई मार्क द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई मार्क द फोकस. नाउ आई मेक अ लाइन, okay, without the object I'm making a line. That's just a trick to ensure that it falls in place. मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक लाइन बनाता हूँ जो कि शीशे से जाके टकरा रही है, एंड देन एट द फोकस मैं एक सीधी लाइन बना के अब ऑब्जेक्ट बना देता हूँ. आई मार्क अ एरो दिस साइड which means the ray went like this, and I make a arrow like this, which means the ray retraced its path and passed through the center of curvature. Once I have done that, now what do? Now I keep my scale parallel to this line, okay, and I draw one more line touching the base, okay. Wherever it touches, वहाँ से मैं एक line इसके सर पे जोड़ देता हूँ. So now there is no question that my rays will not be parallel. I ensured that I make them parallel, and I reconnected the links later on. You know how it happened, but this is the trick while making it. I go the other way around. Okay, so we go now to the final case. Now my object, which was at infinity, came to the center of curvature, came between center of curvature and focus. At the focus, now moves between the pole and the focus. Okay, अब पोल और फोकस के बीच में आ गया, तो मैंने सब कुछ सेम किया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, कर्व बनाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया, उसका हाफ फोकस लिया, फाइनली ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया.
ऑब्जेक्ट को जब मैंने यहाँ रख दिया, मैं फिर से वही बनाता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के हेड को मिला के एक सीधी लाइन खींचता हूँ, which means that the ray started from here and then it retraced its path and passed through the center of curvature. और दूसरी रे को मैं पैरेलल लेता हूँ और फोकस से पार कराता हूँ. Now what do I see? I see for the first time that the rays are diverging, right? It's a concave mirror. We call it a converging mirror, but this time I see the rays actually moving away from each other, which means that they are never gonna meet. And so what do? If I keep my eye over here, I'm doing this because many a times they ask you to make the position of the eye also. Where will you keep your eye so that you can see the image, okay? To me, it seems that the rays are coming from this point. I keep my scale and I extend the line backwards, dotted line. Similarly, I align my scale with this ray and I extend it backwards. And it appears that the rays are coming from this point. So if this is A dash, then perpendicular to it, I'll get B dash, which this I get my image A dash, B dash. And what kind of an image is this? Are the rays meeting? No, they are not meeting. When I extend them backwards, then they appear to be coming from a point. So my image is virtual. What is the position? The image is behind the mirror. So behind the mirror, I have no landmarks. The focus, the center of curvature, everything is in front of the mirror. Behind the mirror, I have no landmarks to mention where the image is. So I simply write it is behind the mirror. The nature I have told you, it's virtual. If it is virtual, it has to be erect. Okay, and I can see that the head is upright here also, the head is upright here also. So it is a virtual and erect image. What is the size? This is smaller, this is bigger. Okay, the ray diagram is showing it to me. So I get an enlarged image. When we talk about the uses of concave mirrors, we will come back to this case and we'll discuss the uses. Because of this property, it's used as a shaving mirror or a makeup mirror. Okay, so that finishes the image formation by a concave mirror for different positions. You have seen that as the object comes forward, the image goes backwards till the focus, which means when the object is at focus, the image is at infinity. When I bring it further in, then I get a virtual image for the first time using a concave mirror. Okay, a virtual and erect and enlarged image. And this is a very commonly asked question because this is an exception in cases of different positions where you get a virtual and erect image. That's all in today's lecture. I hope you enjoyed it. You can always leave your queries in the comment and I promise you I'll answer all your queries. Thank you very much.